Ladies and gentlemen, I'd like to call the man who we all admire so much, Mr. Akshay Kumar. Hello Akshay, request you to please take a seat, thank you. And can I request our CM sir to also come up on the stage please. Give it up for CM sir as well. 26 वर्ष चित्रपट सृष्टीमध्ये कार्यरत असलेले अक्षय कुमारजी आपल्या सोबत आहेत. आकड्यांवर जाऊ नका. 26 वर्ष काम केलेलं आहे म्हणजे 26 वर्षांचेच आहेत असं समजायला हरकत नाहीये. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जलयुक्त शिवार आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी भरपूर योगदान दिलेलं आहे. मी एकच प्रश्न विचारेन सर तुम्हाला. इतकी ऊर्जा या ठिकाणी सळसळते कसं वाटतंय आमच्या ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रामध्ये? मला वाटतं की महाराष्ट्रात आय थिंक महाराष्ट्र तेव्हाच ट्रान्सफॉर्म जायला सुरू झालं जेव्हा सर गॉट सिलेक्टेड ॲज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. To think something like this, to have so many youngsters here and to make them sit and give ideas of theirs is itself a biggest transform for Maharashtra. I hope every state does something like this all the time because it is the youth which comes out with the best ideas. मी खरंच सांगू, मी तिकडे बसलो होतो आणि मी ऐकत होतो काय एवढं चांगलं आयडिया असतात. कोणी सोलारचा आयडिया देतोय, कोणी वेस्ट प्रोडक्टचा आयडिया देतोय. Actual ideas come from you guys, so I must congratulate you guys for being there, and I congratulate our Chief Minister for having such a great idea to bringing all of you guys together, and I hope he does it after every 6 months that we can get ideas from you guys. Thank you. Akshay, always a pleasure to see you. Give it up for both the stalwarts on stage, please. Students, louder. Akshay, कुछ प्रश्न आए हैं on the social media from our students और उनके behalf में मैं आपसे पूछूंगा. And CM sir, अगर आप भी कुछ अक्षय सर को पूछना चाहें, you're more than welcome. पहला सवाल है श्रुति मलवंकर से जो नासिक से हैं. She says, Akshay sir, I saw a new app that you have made, Bharat Ke Veer. How did you get the idea and what motivated you for this? Shruti का प्रश्न है ये. Actually, to be honest, एक दिवस मी आपल्या रूम मध्ये बसलो होतो आणि BBC मध्ये एक येत होतं. There was a documentary of how terrorists are made. There was a documentary which was happening and I was watching it and I was seeing for bad job, for bad karma, for bad things. They tell them कि भैया तुम एक काम करो, ये करो, जाओ ये दंगा करो, ये करो सब कुछ, और आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की फिक्र मत करना, आपके घर में परिवार को पैसे पहुंचा दिए जाएंगे. And that man goes mad and he performs some bad evil things to hurt humanity. I said, why can't we do something like this for positive results? So the same kind of technique, why can't we use it and make a website where people, where the civilian, obviously the government is doing a lot. They are helping the martyrs, the families, they are doing their duties. But we as civilians, हम लोग क्या कर रहे हैं? We have to do something. How about we giving some contribution? And by the way, ये कोई दान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है. ये हमारा कर्तव्य है for being safe in our
in our environment, in our country. We have to do this. And that is how I came with the idea from watching a terrorist, how a terrorist have made that kind of documentary. That is how I got this idea. Thank you so much, Akshay. I'm sure Shruti is very happy listening to your answer. CM sir, ये सवाल तो पूछते रहेंगे from students. What is that one quality of Akshay Kumar जो आप बहुत admire करते हैं? Do you also watch his movies? Tell us about that as well, please. वैसे तो एक चीज़ अक्षय के सभी लोग एडमायर करते हैं कि 20 साल पहले जैसे अक्षय दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। तो इनकी तो उम्र ही बढ़ती नहीं है और जो फिटनेस और जो एनर्जी अक्षय में हमको दिखाई पड़ती है, शायद मुझे लगता है कि यूथ को बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं तो चाहूँगा कि अक्षय इसके बारे में भी बोले, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा यूथ जो है वो इसी एनर्जी के साथ अगर जिएगा तो ही क्रिएटिव काम कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अक्षय की अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो एक ह्यूमिलिटी, एक बहुत ही सहजता अक्षय में मैंने देखी है। आज हम ये कह सकते हैं कि देश के बिल्कुल जाने माने हीरोज में अक्षय है और सुपरस्टार है, लेकिन सुपरस्टार के होते हुए भी वे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके बड़े होने का सबसे बड़ा अगर कोई पैमाना है तो ज़मीन से वो कितना जुड़ा है, वही बड़ा हो सकता है जो ज़मीन से जुड़ा है। जो ज़मीन से उखड़ जाता है वो कुछ दिनों तक बड़ा रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अक्षय की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरोग्यम धनसंपदा असं आपल्याकडे म्हटलेलं आहे। अक्षयजी काय फिटनेस टिप्स द्याल आजच्या युवकांना? फिटनेस टिप एक मैं बहुत ही मतलब हमेशा ये बोलता हूँ और आप लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत बार सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज में मैं बोलता हूँ और मैं आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, but it is important that people should understand. I don't know if there are doctors here, they will agree with me. और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं हमारे जिंदगी में, हमारे देश के, वो भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद अपने पेट में कोई अन्न मत डालो। It is important, trust me, say after 6:37 सूरज ढलने से पहले जो आपको खाना खा लो, उससे पहले मत खाओ, उसके बाद मत खाओ, because it is important that along with your body, every part of your body is resting. But when people eat after 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock when they eat, your stomach takes about 4 to 5 hours to digest your food. So that means when you're sleeping, the whole part of body is sleeping, but except your stomach, it is still working. And when you get up in the morning, again you have your breakfast, and then again poor guy has to work. And कहते हैं कि इंसान की जो health होती है, it is related to its stomach. उसके पेट से related रहती है, तो the stomach has to rest. So I would just request you guys and to tell the youth, I'm sure they are very smart enough, they understand more than even we can imagine, I can imagine. Guys, try and don't eat after 6:37. Your health will be beautiful, wonderful, and you will live a very good and healthy life. Thank you so much for that valuable fitness advice. CM sir, आपने कहा था about humility of Akshay Kumar's. We also see that same humility in you, sir. We always believe people who really deliver, do good work, are blessed with humbleness. So I see that in you. Thank you, sir. Talking about, आप कह रहे थे कि इतने सालों से वैसे ही दिख रहे हैं। अक्षरा कदम जो मुंबई से है, वो कहती है, Akshay sir, you look the same when I was a kid. You look the same now. What's the secret of not growing up? देखिए, उसको बोल दीजिए कि मैं रात को फ्रिज में जाके सो जाता हूँ। It is, I don't know about the growing up and all, I'm going to say I am growing because मेरा बेटा आज से कुछ साल पहले his shoe size was about 5
and now he wears my shoes, which my shoes is 12 number. So it's not that, it's my son, I can see him growing up, so I would say कि Basically, आप अपने son से उन्हीं की तरह दिखते हैं. Both of you look like brothers instead of father and son. That's how young you look. Well, I would love it. It's important that I listen to him, you know. It is amazing. I must congratulate sir for calling so many people, because it's actually the truth is the youth is unbelievably intelligent, and they come out with some great ideas. I sit with my son and his friends, the ideas they tell me about films, they tell me about what kind of web series to make, or they can tell me about the kind of films you should do. मुझे 26 साल हो गए, मुझे लगता है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उन लोगों को नॉलेज हो जाती है. और ये नॉलेज कहाँ से आती है, कैसे आती है, it's a thing to understand, and that's it. Well, Soham Mane from Pune, उनका आपसे ये सवाल है कि अक्षय जी, with such a huge audience and fan following, don't you think Bollywood has a greater role to play rather than just entertainment? Well, it is, and it is doing it also. It is packaging a lot of good messages to give to people in entertainment, like a movie like Pink. When I'm sure people must have watched Pink. Am I right? So it was such a good message. Learn to say no. No means no, and that is an amazing message. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva, और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं, and that whole milk just goes out and waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दें, किसी के वहाँ दे दें, and that can come in use, and that is important because that will make the whole thing work. So religion is great. We practice it. Every religion of our country is great. We should all practice it. But मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ. I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees, because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, and then होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही. I did not require to go anywhere else. मेरे दर्शन वहीं हो गए, and that is the day I realized I don't need to go, because why? Why is the word mandir there? Mandir means man ke andar. Mandir. It is there. The answers are very much within ourselves, and that is what. So, just जो आपका प्रश्न था, we do give messages, kind of film with the packaging of with entertainment, right? Of course, Akshay, we've loved all your films as well. Sir, CM sir, क्या आपके hectic schedule में क्या आपको वक्त मिलता है to watch movies, and which are the films that have inspired you, sir? वैसे जो फिल्म अक्षय ने अभी कही, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर फिल्म थी, क्योंकि हम सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है. धर्म का अर्थ ये होता है कि हम अपने मन का शुद्धिकरण करें. धर्म का अर्थ ये होता है कि हम लोग एक ऐसी ताकत जो हमको ऊर्जा देती है, उस ताकत को हम धारण करें. लेकिन कई बार धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और वही धर्म को अपने आप को धर्म समझने लगते हैं. तो धर्म उससे कई आगे है, कई बड़ा है. जैसे स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ एक ऊर्जा के रूप में. ईश्वर ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम भी ऊर्जावान होते हैं. और इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य है, सूर्य के भरोसे पूरी दुनिया चलती है, वो ऊर्जा देता है, इसलिए हमारे लिए भगवान का रूप है. या धरती है, धरती के कारण हम सारे जिंदा है,
इसलिए वो हमारे लिए भगवान का रूप है। तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड में जो मैसेज अक्षय ने दिया वो अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज, किसी भी धर्म की उसमें बुराई नहीं है, सारे धर्मों की अच्छाइयों को समझते हुए भी कुछ लोग उसको किस प्रकार से मिसयूज करते हैं, ये उसके माध्यम से बताया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी फिल्में जो है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिल्में देखता हूँ, ये मैं बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं फिल्में देखता हूँ और मेरे आईपैड पर 100 फिल्में हैं और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं फिल्म देखता हूँ। सिद्धार्थ सर, आपल्याला थोडासा आमचे प्रश्न म्हणजे इथे आमच्याकडे जे आलेले आहेत ते प्रश्न आवर्ते घ्यावे लागतील, कारण ऑडियन्समधनं आपल्याकडे काही प्रश्न आलेले आहेत. म्हैसकर सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. Hello Akshay ji, I am a great fan of your acting. Thank you. And there is a lot of talk that Akshay ji has not grown up in the last 20 plus years. But I think as an actor he has grown up tremendously, considering various movies at an early stage, and after that seeing Aitraj or Special 26 or Rustum or OMG and Airlift, there is a tremendous canvas and there is a tremendous growth in the perspective and the content and everything. My question is, what goes into this process? Does he go for a special thinking or special policy as to which can account for this growth? See, I have sir, first of all, thank you very much, sir, for watching all my films. And I have this thing called my digital team, which comes and tells me there are so many fans, there are so many people who come on Twitter, Facebook, Instagram, they have so many questions, they tell you, ki sir, why don't you do this kind of a movie, why don't you? So I do get all of them and I read them and I understand, because actually the ideas are lying within them. So, and then once I get the idea from them, then I research about it. You know, it's unbelievable the kind of stories India have. Like अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा. Okay, now toilet ek prem katha, as you guys will know, 54% of India still don't believe in using toilets. वो खेतों में जाना चाहते, वो बाहर गंदगी फैलाना चाहते, and वो समझते हैं कि आसमान खुला हो, वहाँ बैठने में ज़्यादा मुक्ति रहती है, ज़्यादा मज़ा आता है, rather than he just being in the toilet. And ऐसी ही एक कथा मुझे मिली कि जहाँ एक औरत ने, you know, it is yes, we guys are all laughing about it, but it is very important to understand कि हम लोग भी कितने danger में हैं, because people when they use बाहर जाके यूज करते हैं टॉयलेट्स, बाहर मतलब चले जाते हैं खेतों में, या हम देखते हैं बीचेस पे, बाहर अपने बिल्डिंग के नीचे, the kind of bacteria, the kind of things, the kind of problems which we face it, our children face, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो बहुत सारी और सारी चीजें हो, the गंदगी जितनी मचती है, that's the worst thing. और मैं ये कहानी के बारे में आप लोगों को कह रहा था कि ये कहानी है एक औरत की कि कैसे उस औरत ने रियलाइज किया कि जहां उनकी शादी हुई तो there was no toilet and she asked for divorce. She asked for divorce and she will not be there जहां टॉयलेट नहीं. मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं जो मेरी फिल्म के अंदर है, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए. एक सिंपल सी बात है. जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जोर से कह रहा हूं, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए. मत शादी करना. The kind of humiliation women get, the kind of humiliation they go through. I have sat down with women and talked to them जिनके पास नहीं है, जिनको खेतों में जाना पड़ता है, जिनके परिवार वाले ये विश्वास करते हैं कि जहां खाना बनाया जाए, जहां खाना बनाए वहां हगे. That is the kind of thinking they have, and it is a very sad thinking they have. We have to change it.
this 54% has to go down half. And I believe the movie which I have made in an entertaining way, that people will go and watch it and try and help changing it. Akshay, we're going to be taking one or two questions again from our dignitaries. Is any one of our dignitaries wanting to ask Akshay a question? Can put their hands up and we will give you the mic as well. Any questions? So I would like to say something to the CM sir. Sir, can I? Please. I was just thinking, sir, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जैसे हमारे महाराष्ट्र में वैसे पूरे इंडिया में याद है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, we used to have STD booths. मतलब ISD फोन करना है, STD फोन करना है तो हम जाते थे, चलो भाई STD बूथ पे ले लो, and we used to go there. हाँ वहाँ रोको ड्राइवर, वहाँ ISD बूथ है, मैं अमेरिका फोन करना है. Now everybody has mobiles, everybody can call up. Now those STD booths and ISD booths have gone out. How about, sir, वो जो हमने इतने आसानी से STD ISD booth बना दिया, how about making a male and female toilets, a very kind of a toilets there, to those after every 500 meters or maybe 1 kilometer, if we have toilets where anybody, and which is being taken care or by some ex-teacher or by ex-army person or whoever, I mean, say, wants to take care of it and charge 10 rupees for person to use it, because ladies have so much of problems for, you know, waiting, they have to control. I know a DM, by the way, district magistrate, who had a kidney problem because she was not access to toilet and she had that problem because they cannot go. So sir, ये एक छोटा सा सुझाव था, which I was just thinking, कि if we can have this after every 1 kilometer, a ladies and a gents mobile toilets. मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुझाव है सर, एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है और निश्चित रूप से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें सुलभ ने इतना अच्छा मॉडल हमको दिया है तो उसी मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं और जैसा हम विदेशों में भी देखते हैं कि 500 मीटर पर 1000 मीटर पर हाईवेज पर भी हमको कहीं पर भी 2 किलोमीटर बाद 5 किलोमीटर बाद टॉयलेट मिलता ही है और वो साफ इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी यूज़र फी ली जाती है, हम शायद उतना न ले कम ले, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल डोएबल है और विल ट्राई टू डू इट. सर एक और चीज़ और सर, if we can have Maharashtra have an app, a toilet search, it's called search of toilet app, where people can just go into it and which is the nearest toilet, just take a left turn, something like this, you know, it's just a small idea. Wow. See, हम लोग जो कह रहे थे कि अक्षय की उम्र नहीं बढ़ी, तो ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जिस प्रकार का सजेशन दे रहे हैं वैसे ही इनोवेटिव सजेशन अक्षय ने भी दिया है और आज यहाँ 11 प्रेजेंटेशन होने वाले थे, मैं इसको 12वां समझता हूँ और आई थिंक दिस इज द बेस्ट. निश्चित रूप से जितने टॉयलेट्स हैं इनका जियो टैगिंग करके उनको हम ऐप पर लाएंगे सो दैट किसी को भी अगर टॉयलेट की जरूरत है तो वेयर इज द नियरेस्ट टॉयलेट विल बी एबल टू गो. कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much, Akshay, for your invaluable suggestion. Give it up for Akshay Kumar, ladies and gentlemen. That was very heartfelt, and I'm sure CM Sir is going to ensure that it happens as well. Thank you so much, CM Sir, as well. Thank you so much, Akshay. Give it up for Akshay Kumar and CM Sir. अक्षयजींनी ज्या सूचना दिल्या, ज्या सजेशन्स दिल्या, त्यांच्यावर इम्प्लिमेंटेशन करायचे आश्वासन सीएम सरांनी दिलेलं आहे. खूप खूप आभार. सीएम सर और अक्षय जी, यहाँ 5500 स्टूडेंट्स हैं. Can we have a selfie with the students? Put your hands up, sir. Put your hands up, everybody. Thank you so much. Thank you, Akshay Kumar and CM Sir. Ladies and gentlemen, can we show Akshay Kumar the power of the youth with that enthusiasm in the NSCI? Taaliyon ki goonj non-stop, ladies and gentlemen. And Akshay, thank you really from the bottom of my heart for such a solid idea.
which cares about Nari Shakti, which cares about humanity so much. That is the power of a good human being who cares for Maharashtra, who cares for India. Everybody together, Jai Maharashtra! जय महाराष्ट्र. महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने खरं तर त्या पहिल्या कम्फर्टेबल होणं जास्त गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची अशी ही सजेशन आलेली आहे अक्षयजींकडनं आणि सीएम सरांनी ती इम्प्लिमेंट करण्याचं देखील आश्वासन दिलेलं आहे. And that is going to be an experience of a lifetime for all our students of Maharashtra. Thank you so much for being with us, Mr. Ratan Tapa. It's truly an honor to have you with us and transform Maharashtra. Once again, show him our love and respect with a rousing round of applause. Please. Right, please. Since less number of teachers are already available at the rural level, night schools will be operated using the technical operator only. It can provide people easy access to the internet learning. The teaching would be done using video lectures and e-learnings as well. Timetable for students learning in such schools must be skill-oriented and profit. Would definitely love to work towards the reforming rural education and implementing what are our solutions are. So small change for now would prove to be the heaven for well-beings of thousands. So let's think different, let's transform Maharashtra. Thank you. Any queries? The solutions to be सांगितले आहेत, they are really good. The only thing is again, as I have advised, so why the rural schools are lacking in the standards? It's because of we have scarce resources, so we cannot provide, let's say, a digital learning system to every school. मंगल प्रभात लोधा जी, आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाइए. NSCI Chairman Jayanti Bhai Shah, I request you to be on stage as well, please. MLC श्रीयुत अनिल सुळेजी यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. Ladies and gentlemen, this is to launch the Transform Maharashtra. It is my equal privilege to call Ms. Nidhi Kavdar and Mr. Piyush Jalan to present the book to our esteemed dignitaries on stage, please. Ladies and gentlemen, ये एक ऐतिहासिक moment है for Maharashtra with such dignitaries who worked day in and day out for us to make us believe that our dreams can come true are on stage. Transform Maharashtra, book a compilation done by Team Act. जी हाँ दोस्तों, this book is a compilation of the top 5 solutions proposed by the teams to raging issues across 11 verticals. ज्या 11 संकल्पना या ठिकाणी मांडल्या गेल्या त्यांच्यावरती सादरीकरण झाली, त्यातील सर्वोत्तम 5 समस्यांचं आणि त्याच्यावरील समाधानांचं या पुस्तकामध्ये एकत्रीकरण केलेलं आहे. Ladies and gentlemen, the official launch of Transform Maharashtra! What a day it's been and what a journey it's going to be. On Maharashtra Day, a landmark moment. आणि आता सीएम सर
रतन टाटाजी, अक्षय कुमार आणि अनुज माथुरजी यांच्या व्यतिरिक्त इतर मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये जाऊन स्थान ग्रहण करावं. I request CM sir, Mr. Ratan Tata, Akshay Kumar and Mr. Anuj Mathur sir to remain on stage. This is the time for our winners for the prize distribution for all the people who did this wonderful presentation to transform Maharashtra. Dosto, first up I'd like to call Jai Kisan, Drought Free Maharashtra, Drona IIT Bombay. Can we have you on stage for this prize please for my esteemed dignitaries. जय किसान टीम दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्रावर सादरीकरण केलं होतं. खूप खूप अभिनंदन तुमचं. Ladies and gentlemen, up next, Invisible Citizens Empowering the Urban Poor, Bhumiputra VIT Pune. Congratulations, well done. Right. नागरी गरिबांचं सक्षमीकरण हे सादरीकरण या टीमनी सादर केलं होतं. पुढे जाऊया. Ladies and gentlemen, this is Invisible Citizens Empowering the Urban Poor, Bhumiputra. And up next, Connect the Dots, Improving Mobility in Cities, Earthian COEP Pune. शहरांमधील परिवहन व्यवस्थेमधील सुधारणा हे यांच्या सादरीकरणाचा विषय होता. This is Team Bhumiputra on stage. Up next, Connect the Dots, Improving Mobility in Cities, Earthian COEP Pune. Can we have you on stage, please? Thank you. Keep the applause going, ladies and gentlemen. What presentation, what vision, what belief in Transform Maharashtra. Ladies and gentlemen, up next, Looking Glass Zero Corruption Maharashtra, VJTI Interdisciplinary Team, Mumbai. नेक्स्ट टीम लुकिंग ग्लास झिरो करप्शन महाराष्ट्र. भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्रावर सादरीकरण झालं होतं. By the people, citizen engagement in governance, revolution, COEP Pune, team next. Can we have you on stage, please? Keep the applause going, the energy of Maharashtra. प्रशासनामध्ये नागरिकांचा सहभाग, प्रशासनामध्ये नागरिकांचा सहभाग या विषयावर सादरीकरण झालं होतं. Up next, balancing the scales, expediting justice through technology, Dharma, RIT Sangli. Give it up for them, ladies and gentlemen. Talia.
everybody. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायाचं जलदीकरण या विषयावर यांनी सादरीकरण केलं होतं. Up next, ladies and gentlemen, Leap of Faith, bridging the digital divide, Morphosis, SCE, Mumbai. Team next is Leap of Faith, bridging the digital divide, Morphosis, SCE, Mumbai. They're on stage and following them, Smart and Smarter, development of sustainable and livable cities alive, VYWS Amravati. दोस्तों, अगर ये अचीवर्स के लिए तालियां नहीं बजेंगी तो किसके लिए बजेंगी? Yeah, that's the spirit. Smart and Smarter, development of sustainable and livable cities alive, VYWS Amravati. They're ready to come on stage. Thank you so much. Up next, दोस्तों, Clean Slate, Swachh Maharashtra, C2C, TISS, Mumbai. टाळ्या का थांबल्या? I repeat, Clean Slate, Swachh Maharashtra, C2C, TISS, Mumbai. I'm sure you're very excited to receive your prize from our distinguished dignitaries on stage. Coming up next is the Nandini Asha GCER Pune team, molding the future, reforming rural education. Team Cradle to Cradle, C2C. Loved your presentation. And look at the joy of our dignitaries, giving it to them. हमारे distinguished guests, मैं यही चाहता हूँ कि we should get inspired by the youth of today. Please put this up on social media. Transform hashtag, Transform Maharashtra. ग्रामीण शिक्षणाचा कायापालट या विषयावर सादरीकरण केलं होतं या टीमने. Ladies and gentlemen, Launchpad, Startup Maharashtra, Maharashtrians BJTI Mumbai. स्टार्टअप महाराष्ट्र हब पुणे असं लवकरच अस्तित्वात येणार आहे अशी घोषणा मगाशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे.
मंडळी सांगण्यास अतिशय आनंद होतोय की आपण फेसबुक आणि यूट्यूब वरती लाईव्ह आहोत. हा संपूर्ण कार्यक्रम फेसबुक आणि यूट्यूब वरती लाईव्ह प्रक्षेपित होतोय आणि 3 लाखाहून अधिक लोक आपल्याला जॉईन झालेली आहेत फेसबुक आणि यूट्यूब वरती. आपल्या व्यतिरिक्त इथे लाईव्ह उपस्थित असलेल्या व्यतिरिक्त 3 लाखाहून अधिक लोक आपल्याला फेसबुक आणि यूट्यूबद्वारे पाहतायत आणि या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत. The selfie moment of Transform Maharashtra. A big thank you to Mr. Ratan Tata, Akshay, Mathur sir. Thank you so much for everything. I request you to please take your seats. Ladies and gentlemen, give it up for our 3 dignitaries who've done so much for us. And you could see when they were talking to us on stage, the passion they felt for Transform Maharashtra. और अब दोस्तों, the time has come to call upon the person for whom we are all here for, who's the current and 18th Chief Minister of Maharashtra. It is my pride to say, his political career started when he was of your age and has more than 20 years. दोस्तों, lunch के बाद we have superstar performer, playback singer par excellence, KK performing. Lunch announcements के बारे में हमसे आपको बताएंगे. Siddharth, we draw attention to all the audience members. Students on the ground floor are requested to proceed to Palace Hall to the left. Students on the upper floor, lunch arrangements will be made on the upper floor itself. Lunch for guests and media volunteers will help you with the directions. And हम लोग को आगे जाने दो ना. सनी जय महाराज. सनी सामने से एक बार सर इस तरफ आगे अक्षय सर